Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am into the second lecture on the manufacturing cost elements. In the previous lecture I had explained the first two cost elements of the manufacturing cost, that were direct materials and direct labor, and today I am going to explain the third manufacturing cost element, which is manufacturing overheads. As you all know, what is direct cost? These were manufacturing costs that can be easily traceable, and what is traceable? It includes identifiable or attributable directly to specific units produced. And we had divided direct costs into direct materials and direct labor, and I would add another category of the direct cost, any other direct cost as well. So this was in the previous lecture we had discussed about direct materials. It becomes an integral part of the product, and we were moved on to the direct labor, and now I'm going to discuss in detail the manufacturing overheads. Overheads means these are indirect costs, so as it is manufacturing cost, so we may call it as indirect manufacturing costs as well, or indirect manufacturing expenses as well. So manufacturing overheads is the third category of the manufacturing cost. Let's define. In the previous definition of the direct costs, it included manufacturing costs that can be easily traced. Now it is manufacturing overheads, so it cannot be easily traced directly to the specific units produced. So only the word cannot, which is highlighted in red font, is added to the definition. So manufacturing costs that cannot be easily traced are called manufacturing overheads in an economically feasible way. So one can say that these can be traced, but these cannot be traced easily. तो इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हैं ये एक ऐसी कॉस्ट होती हैं जिनको ट्रेस तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल पेश आएगी. अकाउंटेंट को बहुत सारा वक्त, कीमती वक्त उसमें लगाना पड़ेगा, तो इसमें ईज़िली इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता. इसके हम एग्जांपल्स में जैसे जाएंगे उस वक्त आपको वाज़े हो जाएगा कि क्या वजह है कि हम इसको ईज़िली ट्रेस नहीं कर सकते. सो इसके एग्जांपल्स में शामिल हैं इंडायरेक्ट मटेरियल्स, इंडायरेक्ट लेबर एंड एनी अदर ओवरहेड कॉस्ट. तो इसको भी हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की भी अगर एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करना चाहें तो इसको भी हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: इंडायरेक्ट मटेरियल्स, इंडायरेक्ट लेबर एंड एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट. सो इंडायरेक्ट मटेरियल्स में क्या शामिल है? नंबर वन, मटेरियल्स यूज्ड टू सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस. ये रॉ मटेरियल खुद से नहीं है, लेकिन ये वो मटेरियल है जो कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को, मशीन्स को सपोर्ट करेगा. फॉर एग्जांपल लुब्रिकेंट्स एंड क्लीनिंग सप्लाइज यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल assembly plant. So lubricants are used in the machines to lubricate them and make them work properly, and in the same way cleaning is very important for the plant as well as machines. So these costs are not easily traced into the specific units produced. एक end product जो कि कार है फॉर एग्जांपल, हम उसमें देखें तो उसमें इजीली हम ट्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि हम रॉ मटेरियल को इजीली ट्रेस कर सकते हैं. हम बता सकते हैं कि इसके अंदर जो है कितनी डायरेक्ट मटेरियल्स लगी हुई हैं, इसके अंदर कितनी जो है वो लेबर लगी हुई है. इस तरीके से हम ओवरहेड कॉस्ट को इतनी आसानी के साथ ट्रेस नहीं कर सकते. Now we come to the second example of the manufacturing overheads, which is wages paid to employees who are not directly involved in the production work. प्रोडक्शन के हवाले से इसमें दो तरह की एग्जांपल्स आती हैं. एक तो ये कि वो मैनेजरियल स्टाफ, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी, जो कि इस प्रोडक्शन के काम को ओवरसी करते हैं और मे बी दे आर ओवरसीइंग मोर देन वन प्रोडक्ट ऑफ द सेम कंपनी. सो वी कैन से दैट देयर वर्क इज़ नॉट स्पेसिफिक और रिस्ट्रिक्टेड to that one product only about which we are talking. So in the same way, second example is the maintenance workers. मशीन की जो मेंटेनेंस का काम करते हैं उनकी कॉस्ट भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आएगी, और उस तरीके से ये इजीली ट्रेसेबल नहीं है. ट्रेसेबल का मतलब क्या है कि अगर हम देखना चाहें कि मेंटेनेंस वर्कर का जो काम है, उसकी जो कॉस्ट है, उसका ख़र्चा जो है हमारी एंड प्रोडक्ट है. फॉर एग्जांपल एक ख़ास टाइम पीरियड में एक कंपनी ने एक महीने में जो है वो 50 कार्स प्रोड्यूस की हैं. उन 50 कार्स में वो मेंटेनेंस का जो
खर्चा है या सफाई का जो खर्चा है या सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है, वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि कार के अंदर कितनी लगी हुई है। सो उसके लिए फिर हमारे पास दूसरा मेथड है, उस मेथड को हम एलोकेशन कहते हैं। एलोकेशन को हम जो है वो नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ समझेंगे। तो ट्रेसिंग एंड एलोकेशन, दीज आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट। Let's move on to the third example of the manufacturing overhead, which is any other overhead costs, and this is one of the very important category of the manufacturing overheads, and it includes many items, which includes heat and light, factory rent, depreciation, insurance on manufacturing facilities, and so on. One thing to be noted that as you know, there are manufacturing costs and there are some non-manufacturing costs. So non-manufacturing costs includes selling and administrative expenses. So this third category, which is the other overhead costs, could also be found in the marketing and administrative expenses. यानी heat and light, rent, depreciation, insurance वगैरह, ये सब चीज़ें मार्केटिंग एंड सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में भी ये कॉस्ट हो सकती हैं। फ़र्क कैसे पता चलेगा कि इफ़ इट इज़ क्लियरली इंडिकेटेड दैट द रेंट इज़ फॉर फैक्ट्री, सो इट वुड बी इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। इफ़ इट इज़ इंडिकेटेड दैट द रेंट बिलोंग्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, देन इट वुड बी added to the non-manufacturing costs. These are also known as operating expenses or administrative costs, and you are familiar with these terms in your financial accounting courses. Dear fellows, now we come to another category of the costs. First of all, we have understood the direct and indirect costs. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की तरफ। यानी अभी जो हमने अंडरस्टैंड किया, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, देयर आर 3 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एलिमेंट्स, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। नाउ पैरेलल टू इट, ऑपोजिट टू इट, देयर आर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिनका भी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। यू ऑल नो what are these, and you are familiar with these terms while you are preparing the financial statements in your financial accounting courses. Selling costs are necessary to secure the order and deliver the product. इसके एग्जांपल मैं प्रीवियस स्लाइड में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें सैलरीज भी आती हैं, इसमें डेप्रिसिएशन, रेंट एंड सो ऑन, इस किस्म की कॉस्ट भी शामिल होती हैं। अच्छा, अब जैसे कि मुख्तलिफ कैटेगरीज मैं आपके साथ शेयर करता चला आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ एक कैटेगरी शेयर की विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एंड दिस इज़ प्रोडक्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट। तो बताता चलूँ कि ये तकरीबन ये वही चीज़ ही है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए अल्टरनेटिव टर्म प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ बोल दी गई है, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए टर्म पीरियड कॉस्ट बोल दी गई है। प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो आप ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट टर्म इज़ यूज्ड synonymously with the manufacturing cost, and period cost is used synonymously with the selling and administrative cost. तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह दें या प्रोडक्ट कॉस्ट कह दें या प्रोडक्शन कॉस्ट कह दें, इसी तरह पीरियड कॉस्ट कह दें या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह दें या ऑपरेटिंग कॉस्ट कह दें। लेट्स मूव ऑन टू सम अदर डेफिनेशंस। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, और डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर को ऐड कर दें तो इन्हें हम कलेक्टिवली प्राइम कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को ऐड कर दें तो इनको हम कलेक्टिवली कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। और ये प्राइम कॉस्ट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, दीज कॉस्ट आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, बहुत अहम होती हैं, लिहाजा प्राइम कॉस्ट। एंड लेबर और ओवरहेड्स, दीज कॉस्ट आर यूज्ड टू कन्वर्ट डायरेक्ट मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, सो दीज आर नोन एज conversion costs.